Now today let's start with chapter number first, computer briefly. In this chapter I will tell you about input devices, output devices, computer memory and computer language. We have language, computer language, some binary language step. Now let's start with the chapter. A computer, it is an electronic device. What it's do, it accept data from the user, process it, and it gives the desired output or result. It is a machine which is capable of performing different calculation and is help with the help of mechanical computing. It accepts instruction and raw data, it processes them and the output them much more quickly by executing set of instructions, or output data by giving set of instructions. First is, what is data? It is the information that is stored by a computer in a simply a collection of facts and figures. हम collection करते हैं facts और figures. Data processing is the handling and processing of information by computer. ये डाटा को मैनिपुलेट्स करता है और relevant और meaningful output दे. What it gives? It gives relevant and meaningful output. Output is the information result produced by computer and important decision taken by using this. और ये important decision निकला है by taking this information. Now input device, these are the devices which are used for entering data instruction into a computer. Like we have barcode reader. Barcode reader, it is BCR device to read the barcodes. आप कभी देखो शॉपिंग वगैरह गए होंगे तो वो बारकोड को रीड करते हैं. आपको जो प्रोडक्ट है उसके जो बारकोड को रीड करते हैं. एंड वी फाइंड बारकोड्स इन मेनी प्रोडक्ट्स नाउअडेज. बारकोड रीडर्स जो होता है यहाँ पे लाइन से इसमें इंफॉर्मेशन दी, कंप्यूटर पे आपके प्रोडक्ट की क्या जाती है, इंफॉर्मेशन आती है. देन वी हैव मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर. इट इज अ स्पेशल इंक that contain magnetic particles of iron oxide. इसमें magnetic particles होते हैं जो printed होता है ना इंक, मतलब वो magnetic जो इंक होती है उस इंक के थ्रू जो करेक्टर्स होते हैं उनको रीड करता है. It is extensively used in banks for processing check because magnetic ink characters are difficult to form. This makes them ideal for marking and identifying checks, and checks are usually have check number, bank code and branch code printed in magnetic. This information is scanned by magnetic ink character reader and checks are stored sorted city wise and branch. हम उनको branch wise और city wise sort out करते. Now optical character reader. It is mechanical or electronic conversion of images of typewritten or printed text in the machine encoded text. It is widely used as a form of data entry from printed paper records, passport document, invoices, bank statements, computerized exhibit, business card. और ये documentation के लिए बहुत ज़्यादा suitable होता है. And it is common method of digitizing printed text. इसमें आप electronically edit कर सकते हो. They have stored more compactly. They are displayed using machine process. It is a software that is attached in a scanner and a mobile. ये आपके स्कैनर जो में और मोबाइल फोन्स में भी होता है. ऑप्टिकल मार्क रीडर, इससे हम डाटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में. इट इज पेंसिल और मार्क मेड इन प्री डिफाइंड पोजीशन एंड रिस्पॉन्सेज टू द क्वेश्चंस ऑफ टेक्स्ट. देखो आप क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं, वो हमारा शीट बढ़ता है तो उसमें उसको भी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका ही यूज. इट इज कलेक्टेड एंड प्रोसेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. छोटे ही टाइम में इसको हम प्रोसेस कर सकते हैं. ठीक है, आंसर्स ऑफ द मल्टीपल क्वेश्चंस इसमें हम चेक करते. कार्ड रीडर, ये रीडिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ वेरियस कार्ड लाइक मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड, स्मार्ट कार्ड. क्रेडिट कार्ड इज द एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड. इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड कैरेक्टर्स इज मैग्नेटिकली स्टोर्ड ऑन अ मैग्नेटिक स्ट्राइप. Then the card is swiped through a magnetic card reader. It reads the information quickly and accurately. Exposure to magnetic field, physically damage, contact with certain liquids can destroy the information. Now touch screen. It is a touch sensitive computer display screen that can act as an input. ये identify करता है presence and position of touch within the display region. ठीक है, the touch screens are easy to use and often found in public places. जैसे ATMs हो गया, ticket collection terminals हो गए, यहाँ पे मिलता है. It is designed for appliances like mobile. Then we have touchpad. It is a sensing a user finger movement and the applied pressure.
ये आपको लैपटॉप कंप्यूटर में मिलता है एंड देयर आर यूजुअली 2 बटन्स नेक्स्ट टू टच पैड जो आपका लेफ्ट और राइट माउस बटन को रिप्लेस कर। एंड टच पैड इट इज यूज्ड फॉर पेंटिंग एंड सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट इन द, आपको पेंट करना है, कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, then you can use this. And then we have web cameras which is attached to your computer. Laptops have inbuilt webcam जिससे आप इमेज कैप्चर कर सकते हो और लाइव वीडियोस वगैरह देख सकते हो. Then we have output devices. What are output devices? The devices through which we get output from a computer are called output devices. We have learned about some output devices like speaker, headphones. Monitor is also an output device. Monitor, it is one of the most familiar output device. हम इससे बहुत ज्यादा familiar होते हैं. इसको हम visual display unit, वीडियो भी कहते हैं. The image that we see on the monitor, they are made up of tiny dots, which is called pixel. जो clarity है image की वो किस पर depend करती है? Number of dots पे. And the color images that we see on the monitor because the pixel are colored. We have CRT, different types of monitor, LCD, liquid crystal display, LED, light emitting display. These are the 3 types of monitor available. Then we have printer. A printer is an output device that allows you to print work on paper. We have 2 types of printer, impact or non-impact. What are impact printer? It is a printing device in which printing surface strikes the paper and it is slow, noisy. और ये हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए यूज नहीं करा जाता. ठीक है. वी हैव डॉटमैक्स प्रिंटर एज एन एग्जांपल ऑफ इम्पैक्ट. व्हाट आर डॉटमैक्स प्रिंटर? ये एक टाइपराइटर की तरह काम करते हैं. द प्रिंटर हेड स्ट्राइक्स द पेपर एंड इंक रिबन एंड दिस प्रिंटर इज स्लो एंड नॉइजी बट इट इज इकोनॉमिकली रिलायबल, ड्यूरेबल एंड रोबस्ट. देन वी हैव नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. These are the printer in which images are created without being stuck onto the paper and generate less noise. इसकी जो noise है वो कम है. ये ज़्यादा क्या है? Faster है. And we have inkjet printer, laser printer as an example of non-impact. ये किसका यूज करते हैं? लेजर बीम्स का यूज करते हैं प्रिंट ऑन पेपर. दे आर मच फास्टर देन inkjet printer, ज़्यादा फास्टर होते हैं. ठीक है. And they give print quality is much superior. जो इनकी प्रिंट क्वालिटी है वो ज्यादा सुपीरियर होती है, एक्सपेंसिव होते हैं. ये उन प्लेसेस पे यूज करे जाते हैं जहाँ पे जो आपको प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की नीड होती है. इंजेक्ट प्रिंटर, दे आर कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नो कॉन्टेक्ट बिटवीन द प्रिंटर हेड एंड पेपर. These printer are more faster than the dot matrix and they are more expensive और ज्यादा ink consume. Then we have plotter. It is also a printing device that is used for creating. They are also used for creating high quality graphics, charts, graphs, tables and diagrams. Plotters ink pens का यूज करता है, inkjet का, जिससे वो graphics on the paper और polyester pen पे create. They are commonly used in computer aided design and computer aided manufacture. CAD में और CAM like houses, car parts, machinery में कई. Plotters are of 4 types: drum plotter, micrographic plotter, inkjet plotter and flat pad. Then we have projector. ये आपको आउटपुट शो करता है एक लार्ज स्क्रीन पे, बहुत बड़ी स्क्रीन पे. ठीक है. इट कैन बी व्हाइट बोर्ड, व्हाइट क्लॉथ और इवन प्लेन व्हाइट बोर्ड. ये प्रेजेंटेशन, कोई मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस करनी है, उसमें ज्यादातर हम इसका यूज करें. कंप्यूटर मेमोरी. वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. In primary memory, we have RAM and ROM, read access memory, read only memory. In secondary memory, we have different type of memory, like we have hard disk, pen drive, memory card, flash drive. These are the different types of secondary memory. Now, a computer never forgets anything. It has large storage capacity. And it is called memory. And memory enables computer to store data instructions. ठीक है. ये क्या करता है? डाटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है. वी हैव 2 मेमोरी, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी मेमोरी इसको मेन मेमोरी कहता है. इट्स आल्सो इंटरनल मेमोरी. ये आपको कहाँ मिलेगी? सीपीयू बॉक्स में, जिसका मिनिमम साइज है वो 256 MB है. ठीक है. इट कैन इंक्रीज इट्स साइज एनी टाइम एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रैम एंड रोम. रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली. Then we have secondary memory, which is the external memory, और इसको हम auxiliary memory भी कहते हैं.
ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक डाटा को स्टोर करके रख सकती है. इट इज नीडेड बिकॉज जो इंटरनल स्टोरेज होती है वो ज्यादा इंसफिशिएंट नहीं होती है अगर आपको सेव करनी है लार्ज अमाउंट ऑफ फाइल. तो इसलिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं, लाइक योर हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क, पेन ड्राइव. दीज आर द एग्जांपल ऑफ secondary. Then we have computer languages. Computer की programming language होती है which is used to write and develop software. They are classified into 4 types: machine language, assembly language, high level language, और 4th generation. First is machine language. Language that the computer understand and can execute directly without translation. बिना ट्रांसलेशन के वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है. Each instruction is written in binary form, 0 और form में. 0 means off state और 1 means on state. It has advantages of very high speed और इसका जो memory utilization है वो बहुत कम है, तो ज़्यादा memory utilize नहीं करता. It is very difficult to understand and learn machine language. It is extremely machine dependent. A program written in the machine language is one computer may not run another computer. Then we have assembly language, which was the first computer language to use word made with letters or English. इन्हें हम mnemonic codes कहते हैं. In assembly language, each instruction of the computer is written in a using letter combination, and what to do with it, आपको क्या करना है वो खुद बताए. Since a computer understands only machine language, assembly language programs has to be converted into machine language. Assembler translator program used to convert assembly language program into machine language. और जो machine language है वो machine dependent होती है. It is machine dependent. और इसको हम क्या कहते हैं? Low level language. Then we have high level language. इसमें हम इंग्लिश और मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज करते हैं, लाइक ट्रिपल सी, सी, जावा. दीज आर द एग्जांपल ऑफ हाई लेवल. It cannot be run directly onto the computer. It needs to be translated into machine language. And we use object program. And there are 2 types of translator program. First is interpreter and compiler. Interpreter, what it do, it's convert high level language to machine language. ठीक है, ये ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन और एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को रिपीट करता है. देन वी हैव ऑब्जेक्ट कोड्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरप्टर which is not same. If the same instruction is needed later, आप उस प्रोसेस को रिपीट कर सकते. Compiler, it converts high level language program into machine language. It translates whole program once and it reports program error. अगर कोई program error है वो भी वो रिपोर्ट. We have 4th generation language, that is 4G, which is highly user friendly. ये डिपेंडेंट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, डिजाइन करती है, जिससे क्या करता है सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसको रिड्यूस कर. Now our chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.